Hello everyone, welcome back to my channel. Now today in this video we are going to study and learn very important concept which is used in maths and geometry. So make sure that you watch this video till end and let's begin with the video. So as you all saw, we are going to study angle bisector theorem in this video. So angle bisector theorem, for angle bisector theorem, let's first understand what is angle bisector. We all know what is angle. हम सबको पता है angle क्या होता है. So let's draw one angle over here. Now remember, in an angle there are two sides. जैसे triangle में there are three sides, in an angle there are two sides. So we have drawn one angle over here. Let's name it as ABC. Now, if in this angle, if you observe angle B, अगर ये angle B से, if I draw one line over here, or you can say a ray over here, so this ray, if this ray BD divides this angle into two equal parts, that means over here angle ABD should be equal or congruent to angle CBD. So we say that this ray BD is the angle bisector of ABC. I hope everyone is clear with what is angle bisector. So now let's begin with angle bisector theorem. Okay, so let's start with angle bisector theorem. Now see, remember this theorem is very important and it is very simple and it is used in many of the sums in 10th standard. So make sure that you listen this very carefully. Now, before understanding angle bisector theorem, you need to understand or you need to remember two very important things. First, for angle bisector theorem, there should be angle bisector. But obviously, the name says angle bisector theorem. तो क्या होना चाहिए? Angle bisector. Superb. Also, there should be a triangle. So there should be two things if you need to apply this theorem. First, there should be angle bisector. Second, there should be a triangle. ऑलवेज रिमेंबर, ये दो चीज गिवन होगी तो ही ये थियरम अप्लाई होगा, नहीं तो फिर ये थियरम अप्लाई नहीं हो सकता. सुपर्ब. सो टू थिंग्स आर ट्रायंगल एंड एंगल बाइसेक्टर. सो लेट्स हैव वन ट्रायंगल ओवर हियर. सो आई हैव ड्रॉन वन ट्रायंगल. लेट्स नेम इट एज A B C. If you observe in this triangle there are three angles, angle A, angle B, angle C. Now from any of the angles you can draw one of the angle bisectors. Suppose I draw angle bisector from angle A. So this is an angle bisector, so it divides angle A into two equal parts. So here AD is an angle bisector. So let's write this part in given. So in given, we'll say, firstly we have triangle. So we'll say in triangle ABC, what is the only given part? First was triangle and second is angle bisector. So over here AD is angle bisector of which angle? Of angle BAC. Now let's try to understand what exactly is angle bisector theorem says. Now observe here, there are three angles, correct? Angle A, angle B, angle C. And we have drawn angle bisector from which angle? Super, we have drawn from angle A. So just ignore this. A को ignore करो. A को ignore किया तो और दो angle है. There are angle B and angle C. अच्छा, ये ट्रिक है. ऑफिशियल स्टेटमेंट जो ये एंगल बाइसेक्टर का है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम इसका प्रूफ करेंगे. अभी के लिए जस्ट रिमेंबर दिस एज अ ट्रिक. ओके, सो वी हैव थ्री एंगल्स ओवर हियर, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंड वी हैव ड्रॉन एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम एंगल ए. सो इग्नोर एंगल ए. अच्छा, तो बचे कितने एंगल? सो वी हैव एंगल बी एंड एंगल सी. तो किसी भी एक एंगल को पकड़ लो. सपोज आई होल्ड बी. बी को पकड़ा तो बी से दो बार आगे जाओ. 1 2 गए आगे एंड कम दिस साइड ऑल्सो. यहां पे भी दो बार आगे जाओ. सो हियर 1 and 2. सो आई होप एवरीवन इज क्लियर. सो यहां पे वी गॉट समथिंग लाइक BA एंड और आगे गया तो वी गॉट AC एंड ओवर दिस साइड वी गॉट BD एंड DC. सो ऑलवेज रिमेंबर, जिसको हमने होल्ड किया उससे दो बार वो साइड जाना है और दो बार ये साइड जाना है. तो जब दो बार वो साइड गए, उन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू the ratio of these two parts. Remember, this is very important, very simple. I hope everyone is clear. देखो एकदम सिंपल है, एकदम सिंप्लीफाई करके वापस बता दो. देखो, एंगल बाइसेक्टर के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल होना चाहिए, उसके बाद एक एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए. सुपर. इधर एंगल बाइसेक्टर किस में था? ए में था. सो ए को छोड़ के यहाँ पे दो बचे हुए जो एंगल है उनमें से किसी भी एक को होल्ड कर लो तो रेशियो फॉर्म होगा. एंड वो रेशियो कैसे फॉर्म होता है? जस्ट होल्ड बी, दो बार आगे जाओ, फॉर्म रेशियो, एंड दिस रेशियो विल बी इक्वल टू दो बार. और ये साइड में, अदर साइड
and that ratio will be equal to the first ratio. I hope everyone is clear. चलो अभी हम C को पकड़ते हैं. So if I hold C, so same करना है. तो C को भी if I hold, दो बार आगे जाना है यहाँ पे and फिर यहाँ पे and यहाँ पे. So here we get ratio as CA upon AB will be equal to CD upon DB. I hope everyone is clear with angle bisector theorem. Okay, so I hope that you are very clear with what is angle bisector theorem. Angle bisector, there should be a triangle and there should be angle bisector. Let's solve couple of example over here. See, if you observe over here, in this first example, we have triangle PQR and angle bisector is QS. So अब क्या करेंगे, हम Q को इग्नोर करेंगे और किसी भी एक एंगल को पकड़ेंगे. Suppose I hold P. So P से दो बार आगे जाना है over this side and दो बार आगे जाना है over this side. So ratios form होंगे and ratios will be PQ upon QR is equal to PS upon SR. So this is the angle bisector theorem for this triangle. Next triangle. So here if you have triangle XYZ, if you observe here, angle bisector is angle towards angle Y. MY is angle bisector of angle Y. So we'll ignore Y and किसी भी एक को hold करना है. If I hold X तो दो बार नीचे के साइड जाना है and दो बार ये साइड जाना है. So we get two ratios and दोनों ratios will be equal to each other. So here it will be XY upon YZ is equal to XM upon MZ. I hope everyone is clear what is an angle bisector, how to apply it. Always remember there should be a triangle and there should be angle bisector. Only then you can apply this theorem, angle bisector theorem. I hope everyone is clear with this video. Make sure that before going you subscribe and share with all your friends. Chalo, we'll meet in next video. Tab tak take care. Goodbye. See you.